जय श्री राम। महाराष्ट्र के जिला बुलढाणा स्थित मलकापूर में इस राम मंदिर का निर्माण राजा नेमियन इनके पूर्वज हरबाजी भट्ट हरिनारायण द्वितीय हरिनारायण नेमियन इन्होंने सन 1800 में स्थापित किया है। इस मंदिर का इतिहास हुज टू इंडियन नोवेल वराहड़ का इतिहास इस किताब में लिखा हुआ है। This is Raja Nemivan Ram Temple in Malkapur in Buldhana district, Maharashtra. This temple was built in 1800 by the second Nemivan, Harinarayan Harbaji Rao, and the reference of this is also given in the books like I Who's to Indian Novel and the History of Varhad. महाराष्ट्र राज्ये बुलढाणा जिल्ह्या मलकापूर नगरे पुरातनः जागृतः च राजे नेमिवन्तः राम मंदिर अस्ति। अस्य मंदिरस्य स्थापना 1800तमे ख्रिस्ताब्दे राजे हरिनारायण हरबाजीराव नेमिवन्तस्य हस्ते अभवत् इति विषये हुज टू इंडियन नोवेल्स वराहड़स्य इतिहासे जानकारी ददाति। इस मंदिर की जो मूर्तियां है, प्रभु रामचंद्र देवता, लक्ष्मण, माता सीता देवता की मूर्ति जो है चित्रकूट स्थित मंदिर की प्रतिकृतियां मूर्ति बनाई हुई है। इस मंदिर में दुर्मिळ पुरातन श्री राम यंत्र और श्री यंत्र और दिव्य अद्भुत शंकराचार्य जी की पादुका स्थित है। यह श्री राम यंत्र पुरातन महा राम यंत्र की प्रतिकृति है। यह श्री यंत्र घुमट के आकार का यंत्र है। यह अर्धपृथ्वीकार यंत्र 16 पंखुड़ियों के मध्यम में बना हुआ है। श्री शंकराचार्य ने इस यंत्र को श्री चक्र विद्या शक्ति से प्रतिष्ठित किया है। श्री चक्र यह चक्र विद्या में गणपति, बाला, वाराज मातंगी, महावराही, परा आदि देवताओं की शक्ति, ललिता, त्रिपुर सुंदरी यानी महादेवी की स्थापना मानी जाती है। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य इन्होंने अपने शिष्यों के साथ श्री राजा हरिनारायण जी नेमियन इनके मंदिर में श्री यंत्र और बाला त्रिपुर सुंदरी की ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की है। इस यंत्र को प्रसन्न करने के लिए श्री ललिता सहस्रनाम कुंकुमार्चन का जाप किया जाता है। Remarkable thing about this temple is the statue of Lord Rama, Lakshman and Sita are replicas of those found in the Chitrakoot temple. विशेषतः अत्र श्रीरामः लक्ष्मणः सीतायाः मूर्त्याः चित्रकूटस्य मूर्त्याः प्रतिकृति अस्ति। We find rare artifacts here in this temple like Sri Ram Yantra, Divine Padukas and Sri Yantra. अस्य पुरातन राम मंदिरे दुर्लभः श्रीराम यंत्र, श्री यंत्र, दिव्य पादुका एतानि अद्भुतानि वस्तूनि सन्ति। The Sri Ram Yantra is said to have been the replicas of original Vedic Sri Mahayantra. अस्य पुरातन राम मंदिरे दुर्लभः श्रीराम यंत्र, श्री यंत्र, दिव्य पादुका एतानि अद्भुतानि वस्तूनि सन्ति। The Sri Ram Yantram is said to have been the replicas of original Vedic Mahashri Rama Yantram. दुर्मिळ श्रीराम यंत्र अयं वैदिक महाश्रीरामः यन्त्रस्य प्रतिकृति अस्ति इति अवदत्। This yantra is dome-shaped, half globe and made of 16 petals. श्रीयंत्र डोमशेपे अर्धपृथ्वी आकारे षोडश पत्रायाम आकारे निर्मीयन्ति। Shankaracharya established this with Sri Chakra Vidya, which is also known as Sri Vidya. शंकराचार्य श्री चक्र विद्यायाः शक्ति द्वारा अस्य प्राण प्रतिष्ठा करोति। अयं श्री विद्या इति नाम्ना प्रख्यातम् अस्ति। This Chakra Yantra contains the divine power of gods like Ganpati, Bala, Rajmatangi, Mahavarahi and Parha. In this resides the power of Tripura Sundari. And Parshuram Kalpa Sutra also speaks about this. श्री चक्र विद्यायां गणपति, बाळा, राजमातंगी, महावराही, परा इत्यादि देवतायाः शक्ति भूत्वा अस्मिन् ललित त्रिपुर सुंदरी अर्थात महादेव्याः स्थापना अस्ति इति मान्यता अस्ति।
the chief priest of Shrungari Shankaracharya Sachidanand Bharati and the entourage of his disciples came to Malkapur to install this yantra and Lalit Tripura Sundari by worshipping this yantra. शृंगेरी मठस्य शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद भारती स्वशिष्यासह आगत्वा राजे हरिनारायण नेमिवन्तस्य श्रीराम मन्दिरे श्रीयंत्र ललित त्रिपुर सुंदरी च मातायाः स्थापना अकरोत्. Your wishes and desires can be fulfilled by offering Lalita Sahasranam and Kumkumarjan process. This time, Shri Sukta and Pauman Abhishek is offered. श्रीयंत्र प्रसन्नं कृत्वा स्वइच्छा मनोकामनां पूर्तिं कुर्वणाय ललित सहस्रनाम कुङ्कुमार्जनं करोति. अस्य समये श्री सुक्त पौमानं स्तोत्रेण च अभिषेकं करोति इति मान्यता अस्ति. Mathematician Bhaskaracharya is believed to have studied this Chakravidya for 40 years and also spoke about it in his books Shubhagya Bhaskar and Nitya Shodhasri Karnava. गणितज्ञ शंकराचार्यः 40 वर्षेपर्यन्तं चक्रविद्या अभ्यासं कृत्वा सुभाग्यभास्करा नित्यषोडशीकरणवा च द्वारा स्वटिप्पणी अयच्छत्. Shrungari math chief Shankaracharya gave padukas having power of sky flying and he gave this to Raja Nemiman. शृंगेरी मठ कर्नाटकस्य शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती स्वामी द्वारा आकाश भ्रमणाय दिव्य शक्ति पादुका राजे श्रीनिवास नेमिवंत इति समय स्थापनाय अयच्छत्. Most importantly, saffron colored southern style Lord Hanuman stands before Lord Rama and the speciality of this statue is it is Vajradanta. विशेषतः श्रीराम मूर्त्यायाः अग्रे केशरी वर्णः दुर्लभः दक्षिण शैल्यां दासमारुति बालरूपे तिष्ठति. एषः मारुति बालरूपे भूत्वा एषः वज्रदन्त इति दृश्यते. This temple has been visited by Shrungari Peeth Shankaracharya, Mahatirth Swami, Nana Maharaj of Indore and Achyut Maharaj of Amravati and also Manik Prabhu Maharaj from Karnataka. राजे नेमिवन्तस्य श्रीराम मन्दिरे शृंगेरी पीठ शंकराचार्य महातीर्थ स्वामी, इंदोर निवासी नाना महाराज तराणेकरः, अमरावती नगरस्य अच्युत महाराजः, हुमडाबाद कर्नाटकस्य मानिक प्रभु महाराजः इत्यादि सन्ताः उपस्थिताः सन्ति. मन्दिरे भूयारी मार्गमपि अस्ति इति अवदत् यत् एतत् मार्गं लालबागं बरहानपुरं च प्रति गच्छति. Ramnavami is celebrated here with fun fair. अत्र रामनवमी उत्सवः अति उत्साहेन मान्यते. Raje and Nemivan is a title conferred to the Joshis of Dharanga. विशेषतः राजे नेमिवन्तः च इति पदवी मलकापुर तालुकायां धरणगांव इति ग्रामस्य जोशी परिवारं निजामशाही समये प्राप्तम् उपाधि अस्ति. 2002 saw the renovation of the temple by Sri Vasantrao Ji Nemivan. 2000 ख्रीस्ताब्दे वसन्तराव राजे नेमिवन्तः अस्य मन्दिरस्य जीर्णोद्धारः अकरोत्. Devotees folk to visit the temple. I am Shruti Sharma and thank you. एतत् पुरातनः जागृतः च श्रीराम मन्दिरस्य प्रचिति अनुभूत्वा दूरदूरतः अनेकाः भक्ताः अत्र आगच्छन्ति. धन्यवादः. अहं मङ्गला गायकवाड अस्मि.